So we have to open up the style sheet. So oh, तो 7 का भी रहता है। आई थॉट 7 दे दिए है। Okay, so these are the files. They are asking us to open up the CSS file. So that's the CSS file they have. The question is saying us what? Let's have a look again. The question is saying, open the style sheet, done. Add a new class dot red. Actually, dot red is how we'll do it. That sets the font color to hexadecimal color for red when this class is applied. So first of all, we have to make as a new class. So what I'll do is I can actually add it at the bottom or I can add at the top. It's up to me. I can add it over here. So what I'll do is, how do we make a class? We'll take और dot. इसमें स्टार्ट से बॉटम में लिखा क्या हुआ है, लाइक व्हाट इज इट? क्या लिखा हुआ है? तो ये स्टार्ट से बॉटम तक जो कोड लिखा हुआ है ये क्या है? क्या? ये कोड तो है लेकिन स्पेसिफिकली Sets क्या the है? font color to hexadecimal code for red कह रहा है। वो मैं एक्सप्लेन करता कैसे? हूँ। वो मैं करता हूँ एक्सप्लेन, ओके? So what we have to do is it has to be red. So if you, when you have to make a class, आप हमेशा डॉट रेड से क्लास बनाते हो। ओके, इसका हमें सेट करना है कलर। सो सिंपल यही है। although अगर यहाँ से आपको नहीं समझ आती तो सिंपली यू कैन कम इनटू CSS डिजाइनर, open up the properties of your red, and you can see over here is if I want the text color and if I want pure red, all I have to do is, you do know is RGB. So R red. So I have to FF 0000. That's its RGB. So this is pure red. Okay, हमने we have discussed उबैद, इसकी तो पता है आपको ना RGB का, red, green and blue. If you want pure याद नहीं green, लेकिन it will क्या be हुआ? 00FF00 RGB, red, green, blue. If you want pure blue, we would have is 0000FF. Yes or no? यस ठीक है? So technically, we have done this point. Add a new class called center that center aligns text when the class is applied. So we actually have to do is we have to make another class which is dot center. सर, Okay, ये पहले वाले पॉइंट के अंदर ये रेड वाली चीज पहले लिखी हुई थी या ये भी आपने टाइप किया? red क्या किया है? तो ये जो 35 के आगे रेड लिखा हुआ है ये आपने टाइप किया? ये मैंने किया है। हाँ Yeah, I made it सही। right now. Okay, ओके okay, center में करना है, we actually have to do is we have to make center that is going to do is going to center line the text. So हम इधर आएंगे, we'll simply make it center, text line center. Yes or no? मैंने पहले भी आप लोगों को कहा हुआ है कि explore all this please, it's not difficult, just explore all the CSS files yourself. Okay, options मतलब properties, ठीक है? So we have done this. Save your style sheet, take a screenshot to show the content of the style sheet and place in evidence document, meaning you will actually take a screenshot of, मैंने बहुत zoom in किया हुआ है। आपको पता होना चाहिए, preferences में आओ, interface white रखना, I would prefer, because if you take a screenshot of black, it is not preferred. Okay, so इसके बाद मैं काम एक्चुअली मैं करना चाह रहा ये था, काम है क्या? I'll come to font and I'll reduce the font size. So 12 is good, not bad. So मुझे दो लेने पड़ेंगे, खैर है, I'll take two screenshots and place it in the evidence document. ठीक हो गया? Let me just save it. ठीक है, next चलें? Okay, now open and examine the web page सर and मेरा एक 20। सवाल है। बिल्कुल पूछो। सर ये प्रेफरेंसेस में जाके हम क्या क्या कर सकते हैं? वैसे ही मैंने पूछना था, अभी हमने क्या किया प्रेफरेंसेस में जाके? प्रेफरेंसेस क्या बेटा? सर अभी आप गए थे ना वो इंटरफेस वाली जगह के ऊपर, जहाँ से आपने मैं वो कहा कि बैकग्राउंड लाइट हो सकता है, वो वाली ये चीज पूछे। नहीं ये सर, अभी टॉपिक आप ऊपर
कहीं से प्रेफरेंसेस में गए थे ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके सॉरी। आई वाज सेइंग वाज कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि if you want to fit in one screenshot, obviously you can reduce the font size. मगर I would prefer don't go below 12. But interface में ये कह रहा था कि it should be white because if I make it black, okay, and if I apply, and if you take a screenshot of this, तो printout में visible नहीं होता. So you have to make something, okay, your work should be presentable. तो मैं बस ये कह रहा था it should be black. But इसके अलावा I will not discuss anything else. Don't worry, okay? There aren't more points. So open the exam, the web page this. So we have this web page. You need to open this. This is what we have. Okay, whatever it is. So the web page and the tile sheet have been created for you. The web page appears like this. Does it? Let me see again. Let me see the design. So it's supposed to have one, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 rows. So 1, 2, 3, 4, ठीक है. This is at the background. ऐसे आ रहा है. वो बैकग्राउंड में चीज आ रही है, जब देख रहे हो ना ऐसे ही है. सो द वेब पेज इज लाइक दिस. देखो एक वन सेल इज हियर, वन सेल इज हियर, वन सेल इज हियर. सो 3 cells here and 3 here. It is like this. Do you agree with me? ठीक है. वो कहता है each table cell in the diagram is identified with a letter which must सर not appear. जी बेटा. थोड़ा डम क्वेश्चन है, लेकिन सर सेल कौन सा? सॉरी. सर सेल्स कौन सा? लाइक ये रोज और कॉलम्स नहीं है? नहीं, वो ये कह रहा है कि द फॉलोइंग हैव बीन गिवन टू यू ना. तो ये सिर्फ आइडेंटिफाई उसने किया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है. दैट्स इट. गेट द पॉइंट. सो ये ऐसा ही टेबल है, सेम नहीं है. इज द जी सर सेम. सेम। यस और नो. यस सर। ठीक अच्छा है. इसमें 2 रोज हैं इसमें नहीं नहीं. इसके अंदर टेबल में। 1, 2, 3, 4, 5, 5 rows है. हाँ ओके सर। 5 है ना. ठीक है. एंड 2 जी सर। कॉलम्स. कॉलम्स 2 हैं. 2 कॉलम्स। ठीक है. नेक्स्ट व्हाट दिस सेइंग इज edit the HTML so that the table border does not appear. Very simple. All you have to do is you make sure that your table border, when you click on table border, you have to make sure it's 0. So इधर तो 0 नहीं है, but I'll see is कि मेरे टेबल टैग में आके टेबल का बॉर्डर क्या है. So you can see border spacing है, width है. So there is no border. ठीक है. So fine, no issue. आप यहाँ चेक करो 0 है कि नहीं है. ठीक है. आप इधर चेक करो, आपके टेबल में अब यहाँ लिखोगे बॉर्डर इज इक्वल टू 0. तो इसका बॉर्डर है ही नहीं. ठीक है. सो नो नथिंग टू वरी अबाउट. ओके. Edit, replace this with your names and candidate number, save the web page. ओके फाइन, हो गया. अब वो कहता है पॉइंट नंबर 15, set all the text in the cell A1 to H1. So cell A, so this was A. We need to do is just come to the properties and make sure you set this as H1. Pretty easy, right? Set the text web development. It's already created है। Yes, already created. Set the text web development. तो किसी Sorry, और पेपर में भी हमें नहीं कहेगा क्रिएट करने का? मैंने रैंडमली पेपर डिस्कस, मैं क्रिएट करने का मैं क्रिएट करने का भी आपसे डिस्कस करता हूँ, उसके बाद कंप्लीट कर लें. सही है सर। ठीक है. सो वही कह जी। रहा है कि सेट द टेक्स्ट वेब डेवलपमेंट इन सेल बी टू बी H2. सो नहीं, सेट द टेक्स्ट फॉर सेल ए में यही है, और ए में जो भी है मैंने शोन कर दिया, ठीक कर दिया है. अब वो कह रहा है वेब डेवलपमेंट. अच्छा, वो कह रहा है कि इस टेक्स्ट को, यस बेटा आई विल वो ही सेइंग कि दिस टेक्स्ट जो है, दिस टेक्स्ट to H2. So simply select this as H2. Okay.
He didn't say all the text. Did he say all the text? Set all the other paragraphs of the text to H3. ठीक हो गया. तो actually अब मसला ये कि बाकी को select करोगे ना, दोबारा करोगे पैराग्राफ, तो somehow you will see is सारा पैराग्राफ दोबारा हो जाएगा. तो how do we do it? Well, इसके लिए कोडिंग में आपको करना पड़ेगा. आप कोडिंग में आओ. All you have to do is, what you will do is, you will cut this and place paragraph over here. और इससे पहले इसलिए कोडिंग आना जरूरी होती है. Over here you will have H2 and H2 needs to be closed over here, over here. So web development is in H2. The rest of the text is in paragraph. Paragraph open हुआ and paragraph आपका ultimately you can see is being closed over here. If I look at this, you can see is this. ठीक है? Separately हो गया वो. Whatever it is. ठीक है? Fine. Done. Apply the class red to only the text content presentation behavior. ठीक है? Step by step करो points. वो कह रहा है कि आपने अप्लाई करना है कंटेंट को. ठीक है? What? We need to apply this to the class red. So you can see where I have red class. Click on red. Apply हो गया. 2 को select करो. Class red. Behavior layer red. Fine. Okay. Right. मैं इसकी एडिटिंग नहीं कर रहा. Although I would like this to go to the next page. मैं दिल चाह रहा है करूँ एडिटिंग, मगर मैं नहीं करूँगा because it's not required. तो मुझे क्या जरूरत है खुद अपनी तरफ से खुद कुछ ना करो. Set the text in cell CD into the style H2 with class to red. अच्छा, CD में क्या था? CD was this. So he's saying is that in CD this has to be red. Oh, why is it jumping? And set this to red. Fine. Okay. Okay, done with that. Set both paragraphs of the text in cell E into style H3. E is where? Here. Okay, right. Class in HTML as well. No, it has to be in CSS. We are not going to make any. Okay, remember that. Unless and until asked, but they will not ask you that. Okay, so no worries. Okay, क्या कह रहे थे वो? Set both paragraphs of the text in cell E into style H3 with a class center. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम E में जो भी टेक्स्ट है उसको पहले हम करेंगे H3. तो ये है E को हम पहले करेंगे into H3 and class red. ठीक हो गया? I hope no problem. Abad, Rafe, Zoha, everyone. Yes or no? Going well? Puria? Yes, Puria, sir. because आपका web authoring is not bad. Puria Khan? यस सर, सही है है, ना? अच्छा जा रहा है अभी तक. तो आई एम ठीक है, हाँ. प्रैक्टिसिंग मोर पेपर्स ठीक है, ताकि मजीद बेहतर हो जाए. इंशाल्लाह बिल्कुल. हम और क्लासेस रखते हैं इस वीक, ठीक है? So that we can do it better. We'll keep more class, inshallah. Okay. Okay. So यस send मैंने सर. कर दिया. Set the first line of the text in cell F. Okay. The first line of the text in cell F. Where is F? F is actually the last one. So we have to do is, please always read the question very carefully. So set the first line of the text in cell F into paragraph style. This is actually the first line. Okay. We have to set this as paragraph style. अब मैं इसको सही करता हूँ, don't worry. Set the other 3 paragraphs in the cell as bullet list. इसको कर लेते हैं. So what do we have? हमारे पास वो कह रहा है कि हम F की बात कर रहे हैं ना. F. Set other 3 paragraphs in cell F as bullet list. और तो पैराग्राफ है ही नहीं इधर. मैं ये देखना चाह रहा हूँ.
Yeah, we'll use that. You'll use that. But I'm just trying to say is, that is referring to paragraph. I don't see any paragraph. If I'm not wrong, let me read again. Set both paragraphs of the text. तो ई में भी हम सेल को तो नहीं रेफर कर रहे, नहीं ये है, ठीक है, ओके, अच्छा दिस इज वन पैराग्राफ, okay fine, ठीक है, maybe they're referring to lines as paragraph, okay, we'll just see. So the first line, paragraph set other three paragraph in cell F as bulleted list. दिस इज अक्टूबर नवंबर, मैं फाइल वही यूज कर रहा हूँ ना, वही कर रहा हूँ ऑब्वियसली, मुझे इसका वही होता है कि या नवंबर 23 पे, या डू गेट माई पॉइंट, इनके लिंग्विस्टिकली मसला कि क्या है, सेट अदर थ्री पैराग्राफ्स इन सेल एफ एज बुलेटेड लिस्ट, आई डोंट सी एनी पैराग्राफ, एम आई रीडिंग इट रॉन्ग, और एफ क्या है, ऑल ऑफ यू विद मी, दिस इज एफ, ठीक है, चलो एनीवे मैं इसको so make sure you can place appropriate content in the body section of the web page, insert a table including table header, table row, table data, ठीक है, काम करते हैं कि इसको by default I had made it what, let me rectify it. So आप यहाँ देख सक रहे हो कि पैराग्राफ है, ठीक है, और सारे पैराग्राफ हो, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको एक्चुअली नन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये चले मैं इसको पैराग्राफ करता भी हूँ, तो आई हैव टू मेक, ठीक है, यूं कर लेते हैं. सो इफ आई हैव टू डू इज, बिल्कुल उसने सही कहा, वी कैन डू इज, इससे पहले वी कैन डू इज, वी कैन सिंपली पुट, अच्छा इसके दो तरीके हैं, मैं कोडिंग से बताता हूँ ज़्यादा बेहतर है, एल आई करते हैं लिस्ट, एंड दिस लिस्ट हैज टू बी क्लोज्ड वेयर, टिल हेयर, लेट्स से टिल हेयर आफ्टर द कॉमा, इसके बाद टेबल रोज को भी मैं एक और लिस्ट में डाल देता हूँ, सो वी कैन यूज एल आई इज फॉर लिस्ट, okay, and where do I want to close li, so this thing might be new for some of you, magar here we go, lastly I want another list which is this one, use appropriate, so here we go, I use list, here we go, and we can close this, control X, we can close the list over here. So by doing so, you will see is I've actually made is 1 2 3, अच्छा टेबल डेटा इधर क्यों आ रहा है, मैं सिर्फ चेक कर लूँ एक सेकेंड, टेबल रोज, टेबल डाटा जी जाहिर है सही, तो टेक्निकली आपका एक कॉमा इधर था, एक कॉमा इधर आ गया, तो मुझे चाहिए था एक्चुअली मैं लिस्ट को ना, इंस्टेड ऑफ दिस आई शुड प्लेस इट हियर, सो दिस इज व्हाट वी हैव, मेक श्योर यू कैन प्लेस अप्रोप्रिएट दिस टेबल, टेबल रोज, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, फाइन, मतलब उसने लिंग्विस्टिकली गलत कहा हुआ है, सेट ऑल थ्री पैराग्राफ्स, टेक्निकली इधर पैराग्राफ्स नहीं वो लाइंस थी, मगर उसका कहने का मकसद यही था कि यूं आए, डिड यू गेट माय पॉइंट, राइट, सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल व्हाट सर यू, आपने एल आई लिखने के अलावा क्या किया है कोड के अंदर? कुछ नहीं मैंने किया है, मैंने सिर्फ ये किया है, मैंने कोड में ये किया है, So like how do you open and close something ओके या in the while आप writing या the code? सो व्हाटएवर टेक्स्ट, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने ये जो टेक्स्ट है इसको अगर मैंने Mhm. करना है लिस्ट के अंदर, ठीक है, इस टेक्स्ट को, सो आई पुट एल आई बिफोर दैट एंड आई क्लोज एल आई, इसका मतलब ये एक लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद ये टेक्स्ट है सर ये इसको, greater than signs and everything वो खुद करता है, हमने सिर्फ कॉमा लगाना है एंड करने के लिए. जी मैं सिंपल ये लगा रहा हूँ, दैट्स हाउ वी डिफाइन द Okay, sir. एचटीएमएल टैग्स ना, वी हैव टू पुट दिस, पता है इसको डेलिमिटर्स कहते हैं ना, पैराग्राफ टैग, बॉडी टैग, एचटीएमएल टैग, सारों में हम ये यूज करते हैं, सो ये एल आई का जो यूज होता है ये फुल लिस्ट होता है, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ लिस्ट फॉर टेबल, ओके, एल आई को ओपन करो, एल आई को क्लोज करो, ठीक है, वैसे तो Yes, इवन sir. इफ यू डोंट क्लोज एल आई इट विल वर्क, मगर मैं चाहूंगा कि आप वो रूल ना अप्लाई यूज करो, एल आई को क्लोज किया करो, ठीक है,
इसके बाद हमने हमारा ये काम भी हो गया. Set the title of the web page to title of the web page. Okay. So the title, if you look at the coding, you can see over here is I have the title head tag. ठीक है. So body tag आ गया. अच्छा ये एक्चुअली हेड नहीं है, टाइटल नहीं है. सो नो प्रॉब्लम, आप टाइटल खुद भी लिख सकते हैं. इधर आओ एंड जस्ट टाइप. से टाइटल हमेशा होता है, इन्होंने खुद जानबूझ के नहीं किया होगा. टाइटल, और टाइटल क्या हो ये. सो हेड के बाद टाइटल ऑटोमेटिकली आता है. मैं को प्रूव करता हूँ. आप न्यू करो, HTML क्रिएट करो. जब आप करोगे आप देखो टाइटल खुद ही आ रहा है. डू यू सी दैट? उन्होंने they just removed it because they wanted to test you कि where do you put the title. So you should know where to put the title. That's where you put the title, obviously. Okay. In the HTML, set the name of the default target window to self. Yeah. So this is what we discussed in our meta tags. Hopefully you remember the lecture. So उसमें हम ये लिखते हैं. If you remember the meta tag lecture, I can share in the group again. We type is base target. Okay, you have to remember these things. Self. This is what they mean. ये हम पहले कर चुके हैं. ठीक है. So this is how you do this. अच्छा ये point बहुत typical आए हुए हैं. You will find this in so many papers. So you should know this. ठीक है. That's how. What do we mean by this? By base target का मतलब ये होता है कि whenever you click on a link, it will open up in a new window called underscore self. So by defining it over here, इसका मतलब है पूरे पेज में जितने भी लिंक्स होंगे they will open up in a new window called underscore self. Is that clear, all of you? Set the text in cell C as the link to open up the web page. This अच्छा 24 HTML. So वो कह रहा है कि text C कौन सा था basically? So C was actually this. Yeah, नीचे वाला. So I'll select this, and this should be link. You see this link in the properties? Click on this folder, and okay. So ये directly उधर क्यों नहीं गया folder? मैं save कर लूँ. It should have directly gone there. ये folder है. मैं इसका path copy कर लेता हूँ. मैं दोबारा करता हूँ. I directly go there. पता नहीं क्यों नहीं आया. खैर anyway. I am here. So it should open up where? वो कह रहा है कि ओपन करे N24 HTML. ये ओके किया. ठीक हो गया. इसका लिंक बन गया. फिर वो कहता है set the text D as a link to open up in this in a new window called underscore blank. कोई मसला नहीं है. मैं बताता हूँ कैसा करना है. So CSS को सिलेक्ट करो. क्लिक CSN24 CSS. In target, just type, make sure you type in target is underscore blank. क्या मतलब है इसका? If you look at the coding of this, इसमें क्या आ रहा है? href this target blank. मतलब when you click on this link, it should open up in a new window underscore blank for this particular case. Right? Right. Place metadata in appropriate section of the HTML to define the character set for UTF. मेरे ख्याल से पहले Dreamweaver की अच्छी बात ये है कि वो by default खुद ही करता है हमेशा. हमें करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, by the way यहाँ नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है. ओके. आप देखोगे इधर, ये देखो Dreamweaver ने खुद किया हुआ है. सो आप इसी को कॉपी करके यू कैन पेस्ट इट है. अगर नहीं आप चाहते तो आप सिंपल आओ इंसर्ट पे. यू विल फाइंड ओवर हियर मेटा. यू विल फाइंड HTML में, यू विल फाइंड मेटा. सो यू सी मेटा. ठीक है. सो इससे भी आ सकता है, मगर आप डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट होगा. ये आ गया. फिर वो क्या कह रहा है? एड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेब पेज. ओके, व्हाट इज द वेब पेज अबाउट? वेब प्रोग्रामिंग टिप्स. डिस्क्रिप्शन किससे ऐड करेंगे हम? कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड करना पड़ेगा आपको. इंसर्ट मेटा. कहाँ गया मेटा? ये रहा. Do you see this description? I'll write over here is the web page is all about web programming.
Here you go. Description आ गई. Save your web page. Take a screenshot of your HTML source. Take a copy of HTML source and place in the evidence document. मतलब इस सारी कोडिंग को कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो और आपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दो. Yes or no? That's what they mean by that. And display in your web browser. If necessary, resize it. What do they mean by this? So what they mean by this is that you have to preview this in, let's say, Chrome. Yes. So मैंने पता आई थिंक जूम किया हुआ है, कंट्रोल माइनस करके देखते हैं. So 90 100. So we can actually do this as well. पूरा आ रहा है नजर ना? यूं 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 ठीक है, बल्कि यूं ठीक है. You can take a screenshot of this. Obviously not this part. Take a screenshot of this. Fine. And place it in the evidence document. Achha, if it doesn't fit in one, you can take multiple screenshots. No, that probably is a different paper. Okay. In that case, I just told you can take multiple screenshots. 2 and then place them. Don't do it that way. Okay. Don't do it that way. उससे बहुत डिस्टॉर्ट हो जाता है काम, वो वेब पेज टोटली डिफरेंट लगता है. So be very careful what you said. Good question, man, I would say. Okay. So where were we? ठीक है, ये भी हो गया. And we're done with this. ठीक हो गया all of you? Yes or no? ठीक है. उबैद Yes, एवरीवन, आप ये पेपर खुद अटेम्प्ट करो. मैं कल एक और आपके साथ लेंथी पेपर सॉल्व करूंगा. अनदर वन जिसमें जो आप कह रहे हो ना टेबल वगैरह ना, वो मैं कर दूंगा. मगर ये पेपर करो, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पेपर था ये. बल्कि काम करो ऑल ऑफ यू, इसका एक्सेल भी करो, वेब ऑथरिंग भी करो कल बिफोर आवर क्लास. हाउ इज दैट? सर हम कह रहे थे रात को, लेकिन हमसे होता नहीं है सर. हमें बेटा कहीं मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप साथ साथ मैंने वीडियो भी किया, आप साथ साथ करो और मुझे कराओ सबमिट. अब हो जाएगा सही है. इंशाल्लाह. ठीक है, होप सर. मैं वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, पेपर भी. सर ओके मैंने एक सवाल पूछना जी बेटा, बोलो जी भैया. सर मैंने ये कहना था कि आपने हमें ये 1A1 को जो मॉक एग्जाम दिया था, ये एक्सेल और वेब ऑथरिंग का, आप वो प्लीज मुझे ये व्हाट्सएप हमें ग्रुप पे भेज सकते हैं? मैं उसको दोबारा करना चाह रही थी. मैं भेजता हूँ बेटा, मैं भेजता हूँ. मैं दूसरे लैपटॉप में आई सेंड इट टू यू. ओके. ओके, थैंक यू. ओके राइट, ठीक है. ओके बेटा, ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो इंशाल्लाह. ओके. ओके सर, अल्लाह हाफिज. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. सर